Hello everybody, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So in case you're wondering why my bicycle looks like this, it's getting a new paint job. I honestly wasn't the biggest fan of how my bike looked in its stock form with the matte paint job and like very boring stickers and decals. My previous bike also, I specifically got a sparkling red bike because I love a bike that looks very good and that turns heads. And that wasn't the case with the Reacto, so I'm getting a new paint job done. And on this bike also I tried to do some blings, like I chromed out the logo on the down tube and some fancy decals here and there. But now it's time for a complete change in looks. So this frame weighs around 1900 grams, which I think is a bit too much for an aluminum bike. However, the catch is that it is an aero bike, so it has some extra welding, and if you're aware, the Reacto has also been made into a track bike. The exact same frame has also been used in a track iteration of the Reacto, so it has a lot of extra welding spots to make it even more stiff. And trust me when I talk about the stiffness, it is super rigid. The aluminum frame, because of the heavy welding, it just doesn't seem to flex at all. It is a supremely responsive and a supremely aggressive frame. And the studies already show that aerodynamics always over trump weight, especially in the conditions which I ride in, which is 90% flat and just 10% the flyovers and a small and very small hilly gradients. It honestly makes no sense for me to get a climbing frame unless I'm a weight weenie, which I can also be on the Reacto. So by the time you guys are watching this video and this particular shot, the frame has already been sent for a repaint and probably it's done by now, because this is a project which I had been planning for a very long time. I mean, since the day I got the Reacto, I knew it is not gonna stay in the matte black and like very boring looks. So it's finally happening. It's finally happening, and let's see how it goes. So in case you all are wondering where I'm getting the frame repainted from, I have a very good friend of mine. He runs a custom shop. It's called Anything Custom, and the name is completely justified. The reason being, firstly, it is anything, and secondly, it's custom. So as the name suggests, anything, so be it a car, be it a bike, anything that you have in mind, you want to get it customized, anything's custom is there for it. And I'll just introduce you to him. So I've just reached Throttle Shortle Motor Ranch. I'm going to park my car over here and we'll collect the frame. I've only seen one picture and the color wasn't truly justified. In person, it might look good or bad. Let's see how it goes. And here is the frame, guys. The picture didn't do justice, and I'm not sure if the video will do justice, but this frame, it looks proper. I mean, it looks perfectly like how I imagined. हेलो हाय गाइस, मैं दलजीत सिंह फ्रॉम एनीथिंग कस्टम। और हमारे नाम का आपने सुना ही होगा, एनीथिंग कस्टम। तो एनीथिंग कस्टम है तो कुछ भी हम कस्टम कर सकते हैं। बेसिकली स्पेशलाइज हम कस्टम पेंट जॉब करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, ऑटोमोबाइल से, होम अप्लायंसेस से, या आपका कुछ पर्सनल शूज़ हैं, जैकेट्स हैं, वॉचेस हैं, कुछ भी, साइकिल्स हैं, तो हम हर चीज़ को कस्टम पेंट कर सकते हैं। Paji, can you give us a walk around of your shop? हाँ, डेफिनेटली। And explain me the process कि मेरा फ्रेम कैसे पेंट हुआ है and हम complete सारा run कुछ through. दिखाते हैं उसको प्रोसेस वाइज। Perfect, let's go. डन। जैसे अभी हमने ये सारा कस्टम पेंट किया है और इसके अंदर हमने जो नेम लिखा है, ब्रांड नेम, वो भी पेंट से लिखा है। और ग्रीन जो है वो भी एक मेटालिक ग्रीन शेड है। स्पेशलाइज हमने इसको शेड को बनाया है। ये नॉर्मल किसी गाड़ी में उसमें शेड आता नहीं है। तो सबसे पहले साइकिल पूरी ब्लैक थी, तो आपने उसको कैसे स्ट्रिप डाउन करा? पहले उसको हम पेंट रिमूवर और सैंड ब्लास्टिंग करके पूरा रिमूव करते हैं सारा पेंट। उसके बाद बेस प्राइमर्स होते हैं, जो मोटे डेंट्स या स्पॉट होल्स होते हैं उसको फिलर या प्लास्टर पुट्टी से फिल किया जाता है। फिर हमारा इसके ऊपर गोल्डन पेंट हुआ, उस पर स्टेंसिल्स लगे, फिर ग्रीन पेंट एंड फाइनल क्लियर कोट। Perfect. Can we see your paint booth? पेंट बूथ हमारा अभी अंडर प्रोसेस है। Okay. और विद इन 2 वीक्स
वो कंप्लीट हो जाएगा। And completely indoors and sealed from all the dust. सारा Perfect. I think it would be a crime to not show some of the crazy work Daljit Paji has done, which I find absolutely amazing. Also, this by no means is a sponsored video, and I did pay for all the work I got done on my bike. तो पाजी आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मेरे को इस फील्ड में अराउंड 25 इयर्स हो गए हैं। ओके। तो हम पेंट्स में मेन स्पेशलाइज हैं। फिर आउट ऑफ इंडिया भी रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम, और बहुत सारी कंपनीज की ट्रेनिंग्स करी हैं पेंट्स की और उसकी, और बाकी सारा एक्सपीरियंस है। Perfect. तो मैंने I've seen a lot of his work and it is genuinely amazing. But he's a bit underrated and our job is to make him overrated. And his work is something which is really commendable. I shared some sample footage and sample work of his, so you can check out his work. ये हम किड बाइक बनाते हैं जो एक्टिवा के इंजन पे हमने बनाई हुई है, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ बाइक्स लेते तो उसके स्पेयर मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी मेड इन इंडिया है, तो इसमें सारे इंडियन बाइक्स के पार्ट्स ही यूज़ हुए हैं कि कल को कोई पार्ट डैमेज भी होता तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करती है 40-45,000। इसमें लोड कैपेसिटी जो है वो आप 45 kg से लेके 90 kg तक का जो आदमी है वो चला सकता है। ये LML है, बहुत सारों ने देखा होगा, सबने अपने पापा के साथ आगे खड़े होके घूमा होगा इस स्कूटर में। ये वही LML है जिसको हमने चैसी से काट के छोटा करके एक शॉर्ट व्हील बेस इवेंट स्कूटर बनाया है, जो इवेंट्स वगैरह पे प्रमोशंस पे सब हम चलाते हैं। आपकी कोई भी अगर इंक्वायरी है तो आप हमारे पेज को फॉलो करके उसके ऊपर इंक्वायरी डाल सकते हैं, और हमारी जो लोकेशन है वो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे है, नियर थ्रॉटल कैफे। Next stop, Cyclocraze Gurgaon, one of the best bike shop in town. Time to put the bike all together now.